बाद में हम ज्योतिष अभी जो टॉक जो है Recording in ज्योतिष पे बात progress. करेंगे. So welcome everyone. Thank you all for joining. It's a pleasure to have all of you here. So I'll speak both in Hindi and English. Okay, primarily I'll speak in English, then I'll speak in Hindi as well. तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, ठीक है. और आपके जो भी क्वेश्चन होगा वो एंड में हम बात करेंगे. तो बीच में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ही होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, बट विल हैव अ Q&A सेशन एट द एंड. सो नाड़ी ज्योतिष पे ये इंट्रो टॉक है. सो पहले तो ये वेलकम एवरीवन, फ्यू पीपल जॉइनिंग है. वी आर स्टार्टिंग द नाड़ी ज्योतिष टॉक, इंट्रो टॉक. सो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा व्हाट इज नाड़ी ज्योतिष, व्हाट इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, एंड इवन बिफोर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, द ओरिजिन, यू नो. So, there are so many versions or so many, I would say, किदवंतीस जिसे कहते हैं, या फिर I would say there are so many ways people have put the astrology is given by this, that. But what I believe is astrology is given by Shiva to Parvati and Parvati to the rishis, okay, because the Mahakal himself can decide about the Kal, nobody else, okay. So it is the, you know, why it is given to the benefit of the humanity. क्यों दिया गया ज्योतिष? भाई ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए दिया गया. तो ज्योतिष इज द, ज्योतिष केम इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द betterment of the humanity, and there was no other third reason, right? Now whenever we go to any astrologer, especially Vedic astrologer, he will tell you about a lot of things, you know, about the characteristics, planet, behavior, personality, you know, a lot of things. But when it comes to exact predictions, it goes haywire. वो इधर उधर चली जाती है. It doesn't go perfectly. Now there are reasons why, there are so many reasons why in Vedic astrology the prediction does not go right. जब भी हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो स्पेशली वैदिक ज्योतिष या कोई भी ऐसी ज्योतिष, there are so many thousands of versions of ज्योतिष. वैदिक हो गया, जैमिनी हो गया, फिर नाड़ी में ही 50 तरह की नाड़ियाँ हैं, 100 तरह की नाड़ियाँ हैं. But whenever we go to any astrologer, it tells about the personality, character, characteristics, high level they can tell, you know. But the questions like कि मेरी job कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, when I'll get married, when I get the job, how is my financial, you know, when it is getting better, is a good time to do the business, when I recover from a bad health, when I travel abroad, will I be able to settle abroad, all these questions, they are unable to answer with a precise month and date. You all have experienced. It is not me saying, it is the world saying, basically, the whole world. Even astrologers, you know, people come to me, people who learn astrology for like 30 years, 40 years, they come to me and say, Panditji, please teach us Nadi astrology. I said, why you are practicing for so many years? You must have done perfection by like how, what? I say, what is the perfection rate? How much accurate it is? So they, yeah, because I am doing for so many years, it goes, some say 70%, some says 65%, 60 to 70, maximum 75 somebody has said. But it can't go beyond that. I know it can't go more than 70%, even if you go for 75, it is some
inner intuition or something, something like that, or some additional you are using besides just a Vedic astrology. So as you know that, if you learn astrology, it is a Vedanga. What is astrology? Astrology is a Vedanga. And I usually say that astrology is a strong pillar toward the path of enlightenment. Okay? Why? Because in astrology, you see all the karma very clear. आपको अपने कर्मों के बारे में बहुत अच्छे से पता लग जाता है. आपका इस जन्म में क्या रोल है, वो जो पूरी मूवी होती है वो एकदम क्लिक होती है. अगर कोई सही एस्ट्रोलॉजर है तो आपके पूरे जीवन की मूवी एग्जैक्टली बता देगा. आपका क्या काम होगा, क्या करेंगे आप, क्या लाइफ में रहेगा, कैसी मैरिड लाइफ रहेगी, कैसा फाइनेंस रहेगा, सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन टेल. A blueprint of life GPS. Okay, I say astrology is a GPS of life. तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको विद प्रिसाइज मंथ, ईयर, डेट, इनफैक्ट डेट तक भी बता देता है. पर वो कौन बताएगा? दैट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी इज ओनली एंड ओनली विद नाडी एस्ट्रोलॉजर, नोबडी एल्स. और कोई कर नहीं पाएगा, चाहे कितना भी आप कर लो, नहीं कर पाएगा. विद डेट, वीक्स, मंथ एंड ईयर. हम लोग तो डेज तक भी बता देते हैं. ऑब्वियसली इट कम्स विद एक्सपीरियंस. स्टूडेंट्स भी कई बार डेट तक बता देते हैं. मेरे पास स्टूडेंट्स के फीडबैक है. विद इन 6 months they tell sometimes, not always. But हाँ, I usually tell them don't tell date, because if you have said suppose 15th को हो जाएगा और वो 25th को हुआ तो बोलेंगे अरे पंडित जी आपकी प्रेडिक्शन या एस्ट्रोलॉजर साहब आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई. डेट नहीं बोलना है. इट इज़ यूजली द इंटरवल, 2 से 3 महीने का होता है कि इनमें काम हो जाएगा आपका. And as you go ahead practice, then you do the things. So coming back to the Jyotish, so there are many versions of Vedic or astrology, where in Vedic astrology you can share or you can tell on a high level about everything, but precise prediction is not possible. Now the question is why it is not possible. Why in Vedic Jyotish the prediction is not possible? कभी सोचा है? Might have think, right? Because of so many reasons. But the difference between Nadi astrology and Vedic astrology, I usually say, is like you have 2G phone and 5G and 6G phone. In 5G phone you can't even think of video call or so many things. You can't WhatsApp, all those things, social media. You can't even think of 2G phone like what we used to have in 90s and 2000, right? It was so much different. The architecture and everything was so different. In the same way, the Vedic astrology and Nadi astrology is different. There's a sea of difference. एक जमीन एक आसमान, ऐसा इतना डिफरेंस है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपने you have learned the Vedic astrology and now you can do your prediction perfect because you are practicing for 2 years, 5 years, 10 years. No. Even you practice for the whole life, you can't make because the architecture and the system is totally different. You can't do, even if you keep your 2G phone for 100 years, you can't do video call for that, video call from that. Same way, right? So in Nadi astrology, the difference is we check the result or the things at 3 levels. Planet, Nakshatra and Nakshatra lord. Okay? Planet may indicate, for example, Jupiter may indicate wisdom, education, expansion. Nakshatra will focus more on the why this event has occurred, what the lesson is being learned, what is the hidden intention of the time. And the Nakshatra lord, it provides missing links required to precise the timing and the predictions. So the operational intelligence or what actually will happen, because why? Because Nakshatra lord has the highest priority. Even the planet is saying something that though this event will happen. Usually what happens is people go to astrologer and say, oh, your Saturn is there in the 7th house or your Venus is there in the 1st house, so this result will happen.
or seventh house, so there can be this delay or the partnership issues or something. No, you can't decide the result of result of any event just by placement of planet. No, it will not give. नहीं देगा वो. Planet के ऊपर नक्षत्र होते हैं. If planet says yes, nakshatra says no, no will happen. Even if planet says yes, nakshatra says yes, nakshatra lord is more powerful and it says no, it will not happen. So it is 3 level: planet, nakshatra, nakshatra lord. When you calculate and combine all this, then only you can do the right prediction. तभी आपकी prediction सही होगी. Otherwise नहीं होगी. कुछ भी कर लीजिए. Do anything, it will not be perfect. प्रिडिक्शन आपकी तभी सही होगी जब आप प्लैनेट, नक्षत्र, नक्षत्र. अच्छा, उससे भी पहले अगर देखा जाए, इवन इफ आई गो बिफोर दैट, यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पास्ट ऑफ द पर्सन. सपोज अ पर्सन कम्स टू मी एंड सेज आई हैव लॉस्ट माई जॉब, देन आई शुड सी दैट ही हैज लॉस्ट द जॉब ऑन दैट स्पेसिफिक डेट और इन द स्पेसिफिक वीक. See, if you can't track the past or what is going on in the life, you can't see the future. तो अगर आपके पास कोई आता है, वो बोलता है कि मैंने जॉब खो दी है, तो आपको उस हफ्ता, वो दिन तक पता लग जाएगा, क्योंकि आपका चार्ट तभी कोई रीड पर गया ठीक पे जब वो पास्ट ठीक से बताएगा. अगर वो पास्ट ठीक से बता सकता है विद डेट वाइज, मंथ वाइज, तभी वो फ्यूचर बता पाएगा. मेरी शादी हुई थी तो ये प्रॉब्लम आ गई थी. वो अगर कुछ भी है पास्ट, तो आई यूजली से whatever is the chart is the person, whatever is the person is the chart. There is no difference. 99.99%. There are maybe a few exceptions, but 99% thing is whatever is the chart is the person, whatever is the person is the chart. आप लोग समझ रहे हैं? Good to see people have joined from Instagram, from YouTube, good, and Zoom. So what I am saying is that in Nadi astrology, you check the happening of any event at 3 level, and then obviously there are transits and everything, but transits can only be helpful. Usually it is not required many times, but usually it, sometimes it is needed. But transit alone can't make the event happen. It has to be written in the dasha. It has to be written in the timeline. It has to be indicated by the planets. If it is not written in the planets, nakshatra, nakshatra lord, only transit doesn't deliver the result. Okay, तो transit के बेस पे अगर आप बोलेंगे कि result मिल जाए, तो result नहीं मिलता. It has to be indicated or promised by the dasha and by the planet, nakshatra and sub lord. ठीक है. और कभी भी एक planet result नहीं देता. Never a planet gives you the result. It is written in the Nadi Jyotish, combinations of planet and nakshatras give you the result. It is not just, oh, your sun is there in the 10th house, so this will happen, or the first house and this will happen. No, there might be 1 or 2 things. Say I can show you the book. Maybe someday I'll do the things. I'll show you all the books. Mansagri, Parashar, Chintamani, all these books. I'll say, they will say, the planet is sitting in this house, so this will happen. That will only be 50% correct. Not right. Matlab, it is only 50, even 20, 30 I would say. 30, 40%. So on a high level it can give you something, okay, this like a line, thoda sa pata lag jayega, but what actually will happen, what result will happen, it will never happen. And I have done a lot of research on that part. So the key is, no matter what you learn in the world, but if you have not learned Nadi astrology, you will never be able to predict perfect prediction. I would say this is the highest knowledge in the universe. Nothing is beyond that. See, I have been doing astrology since so many years. I would say I've done my first prediction at the age of 9 years. And then slowly and gradually some other modalities, maybe palmistry, maybe something I was keep doing. Even in the, when I started teaching, started consulting, I have seen hundreds and thousands and lakhs of horoscopes.
Okay. So the phrase which I use, whatever is the chart is the person, is the person is the chart, is totally matches. एकदम मैच करता है. देखिए बचपन से शुरू की ज्योतिष की जर्नी तो बहुत पुरानी है. हमने यही देखा कि जो भी लिखा हुआ है वही आदमी है, जो आदमी है वही चार्ट में लिखा हुआ है. और आदमी जब अपने कर्मों को समझ जाता है तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है लाइफ में. he has the direction in the life that I have to do this and this will help me and this will create trouble in my life. तो it is very very important कि मतलब इतने सारे modalities I have seen, I have learned also, but I have never seen such an accurate prediction methodology like नाड़ी नक्षत्र. और देखिए ज्योतिष सीखने का फ़ायदा क्या है. ज्योतिष क्या बोला गया है, जैसे मैंने बोला गया है, इट्स वन ऑफ द 6 वेदांगास. ठीक है, लिम्ब ऑफ वेदास बोला गया है. ठीक है. एंड हमारे जो ऋषिज हुए हैं, चाहे वो महर्षि पराशर हुए, महर्षि भृगु हुए, सेज अगस्त्य हुए, सब लोगों ने अलग अलग सिस्टम डिवाइस की. जैसे नाड़ी की बात करें तो एक वो आता है ताम्रपत्र में नाड़ी. व्हेन वी टॉक अबाउट नाड़ी वी सी दैट व्हाट इज रिटन ऑन द लीफ, that is the lineage of August Rishi. What we teach is the lineage of Bhrigu Rishi. That is more on the nakshatra base. See, earlier 500,000 years back, people used to see nakshatra only and then used to predict. There are never a concept of planets. All was mainly nakshatras. If war has to happen, if rain has to happen, there are phrases in local language. Everybody knew some or the other astrology. Every farmer knew कि अच्छा ये नक्षत्र आ गया है, आद्रा नक्षत्र आ गया या कुछ आ गया तो बरसात अच्छी होगी. यहाँ पर इस टाइम पे शुरू हुआ, इस टाइम पे ख़त्म हुआ, इस टाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये शुरू होगा. ये ज़रूर से मतलब बरसात इस टाइम पे आई है तो बरसात अच्छी होगी क्योंकि अभी ये नक्षत्र है. ठीक है. या इस टाइम में ये आ रहा है तो ख़त्म हो रहा है ये बारिश, तो इस टाइम कुछ भी है, वॉर हुआ, any major or minor event was based on nakshatra. And in Krishna Yajurveda also all the nakshatra mentioned in different names. Some names are different, some are not same because it has changed over time. But what I am saying, in ancient time people used to do prediction only and only through nakshatras. Not the planet concept was not there because they knew that is not accurate. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था ज्योतिष आप एक बार सीख लेते हैं. व्हेन यू लर्न ज्योतिष फॉर वंस इन योर लाइफ, दैट इज द ओनली थिंग बिसाइड्स योर भक्ति, इट गोज टू द नेक्स्ट लाइफ. यू माइट बी सरप्राइज्ड बट दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. सी, whenever you have learned any vedanga, suppose you learn any mantras or any vedangas, or even if you have learned Gita, you have seen small people in the small kid, not small people, small kid, or they are reciting Gita without any knowledge. Why? Because that is there in the impression from the past, or maybe the shlokas of the Vedas, or maybe whatever. So the impressions of whatever you learn as a part of Vedas or Vedangas, that impression also goes to the next life. I say once an astrologer, you will be astrologer in your many of your lives. It is possible, unless you specifically say no, I have done enough of seva, I don't want it. Because astrologer life is like a doctor. He has to deal all with the misery and miserable people and miseries. ठीक है. तो अगर आप जो है लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, if you want to do some seva for the people, guide people, want to be a light in their life. What is Jyotish? What is Jyotish? Means a light. The light given by the divine to the mankind. If you want yourself to become a light and remove the darkness in so many people's life, then you must learn Jyotish, especially Nadi Jyotish. And what I teach is basically from zero to hero. You don't have to be expert. Even if you are expert, you are also welcome, because expert also learns here. And even if you are beginner, you are welcome here. For experts who are in different modalities like Vedic or any other modalities, they are also welcome here. For people who are fresher, because this is from the scratch. So see, you can't fill anything on the full vessel, so I empty out.
I said, whatever you learn, just empty out, and then you learn the new things. Then only that is how you can learn. जब तक आपका घड़ा भरा रहेगा, उसमें पानी कैसे भरेगा? ठीक है? तो आप, जैसे मैं बोल रहा था कि भाई, if a doctor cannot diagnose the correctly, how he can prescribe the right medicine? समझ रहे हैं? अगर डॉक्टर का एग्जाम्पल एक लिया जाए, if you take a doctor's example, if a doctor cannot diagnose the disease, so unless an astrologer cannot diagnose what is wrong in your chart, cannot, whatever remedy you do, doesn't matter, it will not help you, right? So only thing which will help you is if you are diagnosed properly. अगर डॉक्टर को पता है कि इनको ये बीमारी है, ये दवा देंगे तो ठीक हो जाएंगे. Similarly way, because that is the biggest challenge, diagnosing. In a similar way for astrologer also, if you cannot explain how the time is, what the time going on, and with timeline, with exact month, year, what are the possibilities of any event to happen, or what are the positive and negative things which can trouble you, then you are not going to be successful. Simple as that. See, people come to you not to listen to your talk or you are yet this personality, you have this, that. People come to know basic answers. When I get married, when I get the job. And these answers are not precisely mentioned with any of the Vedic astrology. Very few. And even if they say, it will be either not correct or it will be way apart what you have seen. The prediction will be, oh, you will get married in 2027-28. Oh, 2 years. And what we say, you will get married in June to August 2027. That is what we say. You will get proposal in the March and you get married. This is how precise it is. You know. So people are looking for clarity. So the timing, the knowledge of the time. So they can. So that is why I teach Nadi Jyotish in more than 75 plus countries. I'm making aware of Nadi Jyotish in big universities, big platform. I went to this Oxford, Stanford, various talks across world. You might have seen even in Russia, SPIF, Economic Forum, Davos, the recently Economic Forum has happened. I give the talk to the delegates, to the excellencies, to people and make them aware of how you can use Nadi Jyotish in your life to improve your life, maybe personal, maybe professional. So I'm traveling across world to create the awareness of astrology. And it can help in every field. People are using astrology in the field of AI, but they don't know that, Jyotish can help in the field of medical astrology. People are using AI in the medical astrology field and they are collecting data, that how we can predict. See, in medical astrology, you can predict exact what diseases will happen to this person in this life. It will not go beyond that. What all diseases can happen and when this disease will happen with the timeline. Isn't this like a miracle? Right? So, you can always tell very precisely. So this makes, see, for thousands of years our sages understand the time itself, that time intelligence, time itself carries intelligence. When we align our actions with time, the life flows with greater ease. What I'm saying, when we align our actions with time, the life flows very easily. When we align our actions with time, the life flows with a greater ease. When we fight against the time, even great effort cannot produce good result. It can produce minimum result. समझ में आ रहा है ये? Getting point? All?
right? तो अगर आप even what if your time is not good and you are investing in a project, you are starting a business, no matter what you do, you may not get the result which you could have got the in the good time. I'm not saying that hard work will not pay. Even see, I tell you another thing. Even if you have best of the stars and you don't work hard, you will not get the very good result. And even if you have average kind of stars and you work very hard, you can get a good result. There is always a possibility. But suppose your bad time is starting, like many people have started, you know, business in COVID or just before the start of the COVID, invested happily, left the job. What happened? Yeah, some has gained and some has lost. So depending on the time, it is not that COVID was bad for everyone. COVID was good for many people and bad for many. So it is all about how the personal stars of the person is written, what is written in their personal chart, right? And so what I am saying is, when we align our actions with the time, it really helps. Okay, that's why I say Nadi Jyotish as a science of time. Okay, I have given this, I have given this time, this terminology, it's copyrighted. See, Nadi astrology is a science of time, the science of time. If you understand the time, the science of time, and Jyotish is, by the way, it's pure science. It's not some art or something, something divine. No. Please don't mistake. It's a pure science, pure calculation. If your calculation is right, it will go exactly with days and hours as well. It is not something you close your eyes and say anything, oh, this will happen, that will. No. That is maybe another kind of knowledge. That is maybe Akashic, maybe intuition, maybe whatever. But it is a science and nobody can challenge science. Nobody. Right? Unless you do some mistake, science is science. What I would say, even hundreds of students, thousands of students across the world will say the same thing because they have learned the science is same. 2 plus 2 is 4 only. No matter wherever you go in the world. Right? Or whatever formula you mix, the output will be same. Whatever combination. So the right decision at the wrong time may fail. Same decision at the right time can change your life. This is the power of Nadi Jyotish. Right? And what I want to say is, I have seen a lot of entrepreneurs avoiding losses using the knowledge of time. Family makes better decisions. A lot of people have avoided conflict and avoided divorce also. When you know that, okay, this bad time is still this only, this time only, this month only, this year only. Many people I have seen, by the grace of divine, I will not say I have done, because I don't see, Jyotish comes to me as a divine's gift. So I can't take credit of it, even though I analyze and everything, but it is a divine's gift. And whatever prediction I give, just all the credit to the devil, as simple as that. He has chosen me as an instrument. Okay, so by the divine's grace, so many families' conflict has been resolved. Families got together, otherwise their family could have split, could have been divorced. Students have chosen the right career. Individual understand why it is difficulties are there in the why this the karmic period, why there are difficulties, when it will get settled, how they can solve. Business, starting a new business, new launch. So Nadi Jyotish can help you in numerous ways. The intelligent decision for any person, whether maybe a normal household person, maybe homemaker, maybe a business or entrepreneur, or maybe a person who is doing a job, is always good to take the help of time. Right? Because if you don't know I usually say, if you have knowledge of time, you are king and queen of your life. Okay? So, I would say, after learning Nadi astrology, your confidence increases in the prediction, your timing increases, your consultations are more powerful, you can give better guidance to the client, and you don't need any prior knowledge.
thousands of students have started, and it is my tagline is from zero to hero. You don't need to learn anything. The only thing see, I don't know if anybody else in the world take the credit of making astrologers. No, not credit, sorry. If anybody in the world take the I would say take the commitment to make you astrologer, I do take. I say, if you have joined the course, it is my duty, I'll make you the astrologer. The only commitment I need from you is you have to attend all my classes. That's all. Even suppose you mix 1 or 2 classes, that's fine. You see the recording, because video recording is available, it is given. But if you attend my classes, I'll make you perfect astrologer in 4 to 5 months. This is a 6 months course, 2 hours, 1.5 to 2 hours every week. And within 4-5 months, I will make you a very, very good astrologer. And there are hundreds of testimonials you can see in Insta, Facebook, there are hundreds. See, our vision is simple. Every home should have one astrologer and wisdom. So guiding the family better, making important decisions with confidence, understanding favorable and unfavorable time, and helping society with knowledge of wisdom. So this knowledge is not only for professional who are dealing with various aspects of life, but for astrology also, people who are practicing Vedic astrology, they will also learn their astrology will go to another level. It is for the parents, it is for the entrepreneur, it is for the homemakers, it is for the students also. Although I have started from above 18, see, my students are from 18 years to 75 years, right? So anyone who want to make your life better should learn this Nadi astrology. People are spending many years and struggling a lot with the Vedic astrology. You can see people's feedback, a lot of people. But in Nadi Jyotish framework, it is such a powerful framework that within 4-5 months, you learn each and every aspects of the life. I say, so students come to me and say, what we can learn? I say, anything under the sun. Anything and everything under the sun. Forget what. Anything and everything, whatever you want to know under the sun, you will do. You can learn. Even if you want to predict when the human will reach Mars, you can do that. So, and you will learn through real charts, case studies, practical application, predictive framework, research oriented level. In fact, after 6 months, if you want to do research, you can join the 3 months internship and research program where you do the life consulting and research. So in 9 months, if I conclude the 6 months plus 3 months, 9 months, a baby is born, a perfect astrologer is born. Even 6 months you can do very good if you don't want to do research. But if you want to research and do something, your horizon will increase like anything. So research and internship is also important. If you really want to excel, that no, I have to excel, I have to go beyond the, I have to be in top of whatever, top of the world, top of the, astrologer league, or maybe top 100 or top 500, whatever. I will not say numbers, but maybe I see somebody, if I have consulted somebody, he will refer to me to 5 more people. Because the prediction will come true and he will see changes in his life, and then he will show at least 5 people, 10 people in his life. Or wherever he go, he meet, oh, this astrology is very good. Go. See, I got this, I never promoted, hardly maybe never almost. I do sometimes now post something once in a while. But, because people have always recommended me. I've never done promotion. I do promote for this teaching, astrology course, but never for consulting. Also, I think it's good to do as well, because people then go to wrong places, wrong people, and and then don't get the right advice. Recently, only one lady was taking very wrong decisions. He was about to spoil his life, and then she got saved because there was some conflict between husband and wife, and the third person came in his life, and she was saying, I will divorce my husband and go to the third person. I said, the third person, show me the chart of third person. I say, he's much worse than your husband. Your husband is still very much good. The problem is there with your chart. You have to improve on these things. Your husband is still okay. And she agreed, yeah, he's good, he's nice.
I say if you get married to this guy, your life will be hell. Within 6 months, you will get divorced for sure. Write it down. My thing. See, when we say with confidence, then nobody else in the world. Only divine can change. Nobody else. No human can change our predictions. So that is the lying kind of confidence and accuracy we have. Why we have that kind of confidence? Because we do hundreds and thousands of chart practice it. In the course, we do at least 400, 500 charts. See, course never ends. I keep on telling, all the 6 months I put a duration, but I keep on consulting or, in fact, guiding students, right? Even if you come after 9 months or 12 months, or this is a problem, and free guidance, no charge, Okay, this is wrong, this is I help them in. So my aim is to make you an astrologer, not just teach the Jyotish. So there's a difference, difference between teaching astrology and making you astrologer. My commitment is to make an astrologer. Make you a perfect astrologer. At least with the accuracy of 90%. At least 85 to 90% you can say. Minimum. Right? So that is my commitment that I'll make. I don't know if anybody else in the world do the commitment of making whosoever has come as a student to make you a perfect astrologer. I don't know. I have never seen something like that in my. I don't know if you have seen. Do share with me. If any astrologer is saying that his commitment is to make it. Yeah, I have seen many people who teach astrology. There are students, but then they struggle for years. Okay, so my commitment is to make you a perfect astrologer within 6 months. And if you want to go to the next level, then you can do internship also. Okay, so I would say, and briefly again, that the course is starting from 19th of July, Guru Purnima special course. It is every Sunday 8 p.m. to 9:30 p.m. IST. Okay, and you can go to the website Nadi Astrology World and you can pay the fees. The fees is written there. As of now, the fees has changed over the years. As of now, the fees is 1,18,000. Okay, so you can see that, and if your day has any financial problem, any challenges, you can talk to me. I'll see if I can give you some way out or something like that, But yeah, if somebody has a very strong financial thing or something like that, we do have some ways of, some ways we'll guide you on that. Otherwise, the fees, in all cases, fees is given in advance, so that you are also committed. Why I don't take my month or something like that? Because people do half the knowledge, there's no commitment, so they lose very precious thing. Their insight also and the loss from both the sides. So that's why the fees is advanced, and once given it is not returned. Okay, you have no other choice but to become astrologer. Okay, and then also I also say that most of my students have recovered the fees within 1 year. Okay, within 1 year they have recovered the fees, and I would say they have earned much more. The person who are very serious, they have earned much more, and they have created the whole income stream for the whole life. The seva is one part. Then you're earning your bread also, bread and butter also. Obviously, when I say you are earning your bread and butter, you are full-time astrologer, I say donate also. Give some donation as well. Don't do that, oh, I've earned 100 rupees, so I eat 100 rupees. No, don't do that. Astrologers should never do that. Or any kind of people involved in occult business, healing business, or any kind of occult things, which is astrology, healing, guidance, whatever, they should always donate at least 10 to 20% of their income. So I give that guidance to people also. And if you have source of income, you can donate 50%, there's no problem. If you're not dependent on it, right? And I tell them to charge at least minimum start with 3,100 or 5,100. I don't tell to start with 501 or 1,100. No. Your knowledge is premium, super premium. And don't do astrology for free. Don't get into that, oh, astrology has to be free. No.
If you are given free, you are not valued, the advice is not valued. So don't give ever. Yeah, you don't need money, you donate all the money if you want to, but don't give it. If you do free, it will be loss at both the sides, because he will not listen, he will not follow, and your guidance and your effort is also zero. So always take some dakshina, whatever is the thing, as per the time goes. Yeah, if it is closed one, you can give some discount or whatever. You know, there are so many things. You can motivate people to help people or whatever. There are so many ways, you know, but nothing can be given free. If you give free, you will be free. Okay, that is what I said. Your value will be free. You are not valued. Okay, so I do say that must learn astrology, become the hero of your life, become the hero of your family, become the hero of your society, become the hero of your country, and you know, on the world. So astrology is something which is, I don't know why, I must say that every teacher, every student, everyone in the, at least one of the person in the family should know astrology. You know, my request is to Modi ji, to, you know, our Prime Minister, to create a Ministry of Jyotish, Ministry of Astrology. It is very, just like he has created Ministry of Ayush. I tweet that today. I request him to create a Ministry of Jyotish. That is very, very important. So it can be more structured and people can be motivated to do Jyotish. Okay, chalo. Now any questions? If you have any questions, you can WhatsApp me, you can unmute and say, बोलिए. कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, व्हाट्सएप नहीं मतलब या चैट पे लिख दीजिए. कौन कौन है? अमित, अनित हैं, चंद्र हैं, हेमंत हैं, पुष्पेंद्र हैं, सतीश हैं. बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स पे लिख दीजिए या अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं आप. सर मेरा एक बोलिए बोलिए क्वेश्चन आपका. तो जैसे आपके एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरा चार्ट देखा था, तो उन्होंने वैसे तो बहुत कुछ बोला था, लेकिन मेरा ध्यान 2 ही लाइनों पे गया सर. एक उन्होंने बोला मैं रूटीन में क्रिया नहीं कर पाऊंगा, मतलब ऐसे, और मेरे साथ वो होता भी है, वो बिल्कुल सही बोला उन्होंने, मतलब कुछ भी गलती नहीं थी, क्रिया भी नहीं मैं कर पाता, मतलब ऐसे 4-5 दिन कर पाता हूँ, फिर मतलब जाके भी नहीं, कोई बात और एक रूटीन स्टडी नहीं कर पाऊंगा, और बोला रूटीन में पढ़ नहीं पाऊंगा, मतलब जो एग्जाम होगा ना उसके लास्ट दिन या लास्ट हफ्ते में सारा पढ़ के एग्जाम दे पाऊंगा, मतलब ऐसे. तो ये दोनों चीजें ना मेरे को सही करनी थी, और मैंने उनसे पूछा है सही करी जा सकती हैं क्या ऐसे, तो फिर मतलब मैं कुछ सही नहीं कर पाऊंगा. तो कहते हैं देखो, मतलब उनको इसके आगे का नहीं. कोई बात नहीं, देखो वही वाली बात है. देखो क्या होता है, कई बार स्टूडेंट के पास जाओगे, डिपेंडिंग ऑन किसके पास गए, मैं नाम नहीं बोलूँगा, तो देखिए चीज़ें ना, कई चीज़ें आपको विजडम और नॉलेज से आती हैं, ठीक है, ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस से आती हैं, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें, अभी मैंने आपका चार्ट देखा नहीं, आप मुझे 1-to-1 रीच आउट करिएगा, देखते हैं, देन शेड्यूल सम टाइम, इफ इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट देन वी विल डिस्कस, ठीक है. हाँ, पर मैं आपको एक हाई लेवल ये बोलूँगा, हाई लेवल आपको ये बोलूँगा, देखो हर चीज़ को, कोई प्रॉब्लम को एक लिमिट तक तो ठीक किया जा सकता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता दुनिया में जो ठीक नहीं किया जा सकता. हाँ, कई बार तकलीफ होती है, कई बार चीज़ें होती हैं, और फिर कोई भी चीज़ फॉरएवर नहीं होती, एक बार समझ लीजिए, नथिंग इन द फॉरएवर. से बॉडी भी चेंज होती है ना, बॉडी जो बचपन में थी, जो जवानी में थी, जो बुढ़ापे में, सब अलग अलग है ना. एवरीथिंग चेंजेस, प्रकृति भी चेंज होती है, सो एवरीथिंग चेंजेस, टाइम साइकिल ऑल्सो चेंजेस. तो जो चीज़ आज है वो 10 साल बाद नहीं रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ चीज़ें रह सकती हैं, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं. अब शक्ल सूरत इस चीज़ की कोई रेमेडी भाई देखो, तुम स्टूडेंट हो राइट, मुझे लगता है तुम विष्णु सहस्त्रनाम सुनो रेगुलर, तुमको बहुत हेल्प मिलेगी. विष्णु सहस्त्रनाम करो और पद्म साधना करो. क्या एज हुआ तुम्हारी? पद्म साधना तो मिली नहीं अभी. कोई बात नहीं, यूट्यूब में देखो और करो, कोई दिक्कत नहीं है. योगा तो लोग 5-7 साल की उम्र से कर रहे हैं, तुम तो कर सकते हो, तुम बड़ा है, ठीक है. लेकिन मैं 18 साल से नीचे हूँ. कोई बात नहीं, यूट्यूब में पद्म साधना है बोला तो सही, खोलो, देखो और करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है.
यूट्यूब में जाओ, खोलो आराम से, वहाँ पूरा पर गाइडेंस है, प्रॉपर ऑटो लिंक का एक बना हुआ है पद्मसाधना, उसको देखो, करो, फायदा होगा। ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं कि किसी गुरु के थ्रू ही देनी है, वो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी इंटरनेट पे है तो किसी पर्पज़ से ही है, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, तो आप ज़रूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए, होगा, मालिक की दया से सब अच्छा होगा। और गुरु का दर्शन करिए। ठीक है, जब भी पॉसिबल हो गुरु का दर्शन, गुरु के दर्शन से बहुत फर्क पड़ते हैं। ठीक है, इस लाइन पे चलिएगा, होगा। और बताइए, किसका कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? इंस्टा पे, यूट्यूब पे? बोलिए। मुझे यही पूछना था कि बीएनएन प्रिडिक्ट करता है, तो ये रेमेडी है बीएनएन की खुद की कुछ, मतलब वो फॉलो करता है कुछ रेमेडी देने का, कि वो इन जनरल जो देते हैं सब एस्ट्रोलॉजी में वैसे रहता है? बीएनएन की बात करें आप, इसकी बात करें, क्या बात करें? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम प्रेडिक्शन, देखो बीएनएन अलग है, ये नाड़ी नक्षत्र अलग है, पहली बात तो ये समझिए। ठीक है, हाँ। तो नाड़ी नक्षत्र में आपको रेमेडीज ही, आई बिलीव इन सी, मेरी रेमेडीज दुनिया से तो अलग ही होती हैं। पूरी दुनिया में अलग रेमेडीज होंगी, मेरी अलग रेमेडी, क्योंकि हमारा लीनिएज है गुरु का। ठीक है, वी बिलीव दैट एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी। सो वी चैनलाइज एनर्जी, जो भी एनर्जी। तो ट्रेडिशनल जो होती है, इधर कर दो उधर कर दो, उससे तो बहुत डिफरेंट होता है। तो आप सीखेंगे कोर्स में, बहुत चीज़ सीखेंगे, और उसका परफेक्ट रिजल्ट भी है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट बहुत कमाल वाला रिजल्ट है। वही मुझे जानना था कि रेमेडी भी आएगी इससे, राइट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रेमेडी आएगी, सब कुछ। सिर्फ बिना रेमेडी के ज्योतिष इनकम्प्लीट है। प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, तो रेमेडी। और क्या क्वेश्चन है? इंस्टा पे किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? यूट्यूब पे है? मैं कुछ पूछ सकता हूँ गुरुदेव, चरण स्पर्श? हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए पूछिए पूछिए। गुरुदेव, आपका सानिध्य मुझे मिला था अभी नेशनल स्टेडियम में, आप एक सेमिनार में हाथ मिलने गए थे, शायद वो देखता बताया, मुझे था ये मत भूल जाओ। अच्छा 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 अच्छा, पहले तो आपका चरण स्पर्श सर जी। खुश रहिए खूब आशीर्वाद। बताइए। मुझे ये पूछना था गुरुदेव, मैं अपना दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप चलाता हूँ, और मेरे ना मोस्ट ऑफ संडे को ही शोज होते हैं, खुद ही लिखता हूँ, खुद ही डायरेक्ट करता हूँ। तो अगर वो टाइमिंग जैसे आपने संडे की बताई, तो 8 बजे से, तो मैं 11 बजे तो फ्री होता हूँ रात को। ओह, संडे का ही होता है। आपको सीखना है एक्चुअली गुरुजी मंडे हाउस में सैटरडे संडे को शोज करते हैं। अच्छा, सैटरडे संडे ही होता है? संडे को नहीं, हर संडे नहीं होता है, पर महीने में 2 संडे मेरे को होते हैं। हाँ, 2 होते हैं ना। देखो 2 चीज़ें हैं इसमें। देखो क्या है, हमारे तो, मैं तो एक इनफैक्ट एक अलग से कोर्स लॉन्च करने वाला था, ऑफलाइन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। आप अगर कमिटेड हैं तो मैं सिखा दूंगा। कैसे कि आप वीडियोस देख लेंगे, आपको जो क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप मेरे को 1-to-1 बात कर सकते हैं। ठीक है, यूजली तो ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे वीडियो के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर डाउट है, क्योंकि मैं अपने सारे स्टूडेंट से 1-to-1 टच रखता हूँ। तो ऐसा नहीं है क्लास खत्म फिर जाओ अपने घर, हम अपने घर, नहीं, ऐसा नहीं। आप मेरे स्टूडेंट होंगे तो जीवन भर आप मेरे साथ हैं। और दूसरा, आपको कभी भी प्रॉब्लम है, यू कैन रीच आउट टू मी व्हाट्सएप में, मैं आपको टाइम बता दूंगा, उस टाइम बात करिए, डाउट्स क्लियर। मेरे लिए तो देखो सेकंड्स लगते हैं डाउट क्लियर करने में, आपके लिए मे बी वो बहुत बड़ा हज़ारों घंटे का डाउट हो, और मेरे लिए तो 2 सेकंड लगना, 1 सेकंड लगना, तो मैं वो टाइम। मुझे ये पूछना था, जैसे कि अभी आपने, मैं आपका पूरा सेमिनार ये देख रहा था, तो जैसे आपने प्रेडिक्शन की बात बताई ठीक होगी, तो क्या मेरी कुंडली ये कहती भी है, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर सीख सकता हूँ या बन सकता हूँ? देखो मैं ये मानता हूँ, पहली बात तो लोग कई बातें बोलते हैं, मैं ये मानता हूँ अगर किसी के मन में सीखने का है ना, वो मन में इसलिए आया क्योंकि प्लैनेट्स बोल रहे हैं, नक्षत्र बोल रहे हैं जी, अदरवाइज आप इस टॉक पे भी नहीं होते। ठीक है, आप कहीं कुछ हो रहे हो तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। ठीक है, पर हाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आप इसको प्रोफेशनली कितना सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो आपके चार्ट में हो सकता है। तो वो आप मेरे को अगर व्हाट्सएप कर लीजिएगा नंबर, मैं आपको देख लूँगा, 1 सेकंड में बता दूँगा हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है कि अब आप इसको प्रोफेशनली कितना अच्छा कर पाएंगे। पर एक बार बता दीजिए, एक बार बता दूँ, एस्ट्रोलॉजर जिसके भी मन में आए ना, क्या मैं एस्ट्रोलॉजी सीख सकता हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है, बस ये समझ लीजिए, ये गूढ़ रहस्य है। ठीक है, आपको एक गूढ़ रहस्य ये बताऊँ, गूढ़ रहस्य कैसे है कि आपका मन भी जो है ना प्लैनेट्स के कंट्रोल में होता है, आप कठपुतली से ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर मोस्टली। ये तो मैं भी मानता हूँ, पिक्चर ऑलरेडी बनी हुई है, मूवी ऑलरेडी बनी हुई है, जस्ट एंजॉय करिए लाइफ में। अगर इस तरह से ज़्यादा कुछ है नहीं जो आप हिला सकते हैं,
तो मैंने तो ये देखा है कि टाइम जैसे चेंज हुआ ना, मन में जो नहीं था वो अब हाँ हो गया, जो हाँ था वो नहीं हो गया। जी नो बिकॉज वी कैन प्रिसाइसली ट्रैक द टाइम, एनालाइज द टाइम। जी आप पिछले जी 5 साल से बोल रहे हैं कि शादी नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा, जैसे ही प्रत्यंतर चेंज हुआ, अंतर प्रत्यंतर चेंज हुई इसी महीने से, मन बन गया यार आप कर लेते हैं आपको टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स हाउ आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। सो ये अगर आपके मन में आया तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप सीखिए, और सीखना चाहिए। देखिए रिस्पेक्टिव ऑफ, मैं कहता हूँ हर आदमी को सीखना चाहिए। अब प्रोफेशनली कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है, पर हर आदमी को सीखना चाहिए। एटलीस्ट अपने घर परिवार में तो देख ही पाएगा बहुत अच्छे से, जी ठीक है? तो मेरे नहीं को सर, करना चाहिए। मतलब नेट पे भी सर बहुत सारे आजकल मैंने देखे हैं, मतलब जितना कल साइंसेस, मेरे को सर तकरीबन 22 साल हो गए मानस पढ़ते हुए। मैं अच्छा। कोई मंदिर नहीं जाता, रोज 2 पेज मानस पढ़ता हूँ बस, और मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो मैंने तो ये देखा है सर आजकल लोग 3-4 महीने का कोर्स करके मतलब खड़े रहते हैं कि वो हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, देखो एस्ट्रोलॉजी में। नहीं देखो मैं बताऊँ आपको, अगर आप नाड़ी सॉल्व, देखो एक तो आपका टीचर होना चाहिए कमिटेड, पहली बात तो। और अगर आपने 10-20 केस स्टडीज करके आप बोल रहे हैं आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, तो आप अपना बेवकूफ़ बना, ठीक है? जी। आपको कम से कम 6 महीने में बन सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बन सकते। मैं बनाने में तो आदमी को 2 हफ्ते में ही बना सकता हूँ, पर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर 2 हफ्ते में सूत्र तो सीख लेगा, ठीक है, पर क्या है उसके बाद उसको प्रैक्टिस कम से कम 6 महीने करनी है। अगर आपने 400-500 चार्ट नहीं देखे, यू आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन, सिंपल एज दैट। बिकॉज प्रैक्टिस के बिना नहीं आता, नो मैटर वॉट यू मे लर्न द सूत्रस, दैट इज ओके। सो मेरे को नहीं मालूम दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आप, मैंने कहा ना 5 महीने में आप 85 to 90% एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो ये नहीं कि एक चार्ट देख लिया। यूजुअली 90% ऑफ द प्लेसेस आई हैव सीन, और आई गेट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, आई सेड हाउ मेनी चार्ट यू प्रैक्टिस, आई यूज्ड दे सेड 15, 20, 25। आई सेड व्हाट, मैं एक सब्जेक्ट पे 20-25 चार्ट करता हूँ। अगर शादी की बात कर रहे हैं तो शादी में 20-25 होगा, मैच में चाहिए होंगे तो उसमें 15-20 होंगे, 25 होंगे। करियर होगा तो उसमें 25-50 चार्ट होंगे, ठीक है? हेल्थ होगा तो उसमें 10-20-15 चार्ट होंगे, 50 चार्ट होंगे। समझ लो मेरी बात? तो जब तक आप 400-500 चार्ट नहीं कर लेते, और उसके बाद ये बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, रोज 2 चार्ट रोज करो, ये करो वो करो, और वैसे इतना टाइम कमिटमेंट लेने को नहीं बोलता आपको, स्लोली होता है। बट इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस यू विल नॉट लर्न, नोबडी विल कैन लर्न, ठीक है? और बाकी सब विद्याएं में, दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं, वॉट एवर नॉलेज इज देयर फॉर द प्रिडिक्शन, nobody can beat Nadi Nakshatra, nobody, no knowledge, that I can claim very strongly, and nobody can challenge me as well. जी ये बात बहुत शुक्रिया गुरु जी, आपको चरण स्पर्श। खूब खुश रहिए, शुक्रिया, खूब खुश रहिए, और जय करिए। और आपका अगर 2 संडे है, 2 संडे भी है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती हैं और आप 1-to-1 बात कर सकते हैं, तो करिए। मैं कहता हूँ करिए, नहीं तो फिर यूजुअली क्या है सैटरडे संडे ही होती है, अगर ये नहीं हुआ तो सैटरडे होगा। हाँ कभी ये होता है सैटरडे मॉर्निंग बैच आ जाए, संडे मॉर्निंग बैच आ जाए, वो अलग बात है, वो भी क्या, पर इसमें भी कर सकते हैं, इस पर बात नहीं। तो चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है? कई बार मंडे होता है, कभी कम होता है, हाँ ठीक है? मैं आपको मैसेज कर दूंगा सर। हाँ मैसेज कर के बाद आगे डन, जैसा भी होगा बात कर लेंगे। अगर कोई आगे आ रहा हो तो आगे भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, वॉट एवर वर्क्स। सी मेरे को ये मालूम, कोई कुछ मेरे को ये मालूम है, अगर आप अंदर से कमिटेड हैं तो मैं तो मेरी तो कमिटमेंट 200% है, ठीक है? अगर आप सीखने में तैयार हैं, हाँ ठीक है, ओके चलिए। और किसी का क्वेश्चन, और किसी का क्वेश्चन इंस्टा पे देखो, मैं किसी का क्वेश्चन तो आया है क्या? तो ये सुबह 8 to 9:30 है कि शाम को 8 to 9:30 है संडे को? ये सुबह का संडे है को ना गुरुजी? नहीं, ये शाम को है, संडे को शाम को है। क्या वो आपका कुछ गया वो है क्या? संडे को रात को है, 8 से 10, 8 से 9:30। अच्छा रात को है। हाँ रात को। संडे का बैच अभी मॉर्निंग वाला अभी ख़त्म हो चुका है, वो स्टार्टिंग किया हमने, सैटरडे का मॉर्निंग का चल रहा है अभी, ठीक है? तो होते हैं, पर नहीं, अभी क्योंकि वो जो आया था उसमें मॉर्निंग लिखा था, इसलिए मैं जरा चेक कर लीजिए कि मॉर्निंग नहीं है, मेरे ख्याल से को भेजिएगा। शाम का आपका कुछ रिसर्च वाला है, ऐसा आया था। नहीं वो जो गलत, मैंने आपने गलत देखा होगा, देखिएगा, मेरे को भेजिएगा, जी, देखिएगा। शाम का रिसर्च का है वो 5:30 से बजे से है, और ये 8 बजे जी, से जी। है। एक बार देखिएगा, अच्छा हमारी साइड से रात गलती को होने के आगे- कम चांस है, बाकी देख लीजिए।
जी जी ठीक है, तो चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ, वेव कर रहे हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो आई थिंक थिंग्स गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर हम ज्वाइन करेंगे, कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे। बट मैं ये कहूँगा, व्हाट आई विल से टू एवरीवन इज जॉइन द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोर्स, दिस इज गुरु पूर्णिमा स्पेशल नाड़ी ज्योतिष कोर्स। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी and make your life blossom. Even if you are in the spiritual path, even if you are professional, even if you are entrepreneur, even if you are student, join and learn. And you'll be able to do good prediction, perfect prediction within 6 months. The only commitment I need from you is you have to attend all the classes. That's all. Okay? Either video or audio, whatever, video or offline or online, that is a different thing, but you have to do all the classes, and I'll make you a very, very good astrologist. That is my commitment. Okay? Jai Gurudev. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you.